Hello, people. I'm Mayank. I'm 19-year-old and living in Delhi. Right now, I'm studying in Civil School of Technology and pursuing my bachelor's in CS from BITS Pilani. So, hi. Today we will be doing databases in computer science. But as it's our first lecture, I will be guiding you through what is CS and what are the things that you can do and what will help you to make your future more bright. So, first of all, a quick introduction of mine that I have given you. I want to add on things to it. So for many people will be asking me that why I'm teaching you, although I'm in college. So the first thing, so yeah, I'm in college, but I have been working in startup from last 6 to 8 months, and along with that, I have attended multiple hackathons, and even I have a contest rating of around 1840 in lead code, and along with it, I have a global 740 rank in lead code bi-weekly contest that happens every week. Yeah, so that was my best rating, but yeah, we will improve on it. Even not we will, I will improve on it, of course. So let's start our today's class, which will be on databases. So before going to databases, it is our first class, so I have made a proper plot for you all guys that how you have to look computer science from now. Uh, it is my plot. I have made it. I think this will go best with anyone who is starting as a beginner, but I don't know uh, how you will do it. You can even do it more better even without going with this path. So I'm not saying that to anyone. So first of all, let's start it. So you are a beginner. आपने अभी computer science start करी है, तो you will go with DSA and web dev. So you will be asked what are these two things. So first of all, when you go to computer science, I mean, I'm not saying here you are doing any course. I'm not saying here you are have computer science degree. Just saying that you have heard about computer science and you have to do it. So how you do it? You first of all learn basics of any language, like how to declare a variable in it, how to use if a condition there, how to use loops in that language. Then you learn about OOPS in that language, that is object-oriented programming, if that is OOPS language. Then where we go. So after doing that, there are two. First of all, the things I have said is not very much. It should be done in 1 or 2 weeks. After that, if you are more than 20 years old or around 18, it should be done in 2 or 3 weeks. After that, our starts main computer science, where we start with DSA and web dev. And DSA, what you require to do DSA, DSA is basically data structures and algorithm. To do it, you require, I mean, a lot of basic requirements like you have to do your loops and all things. Then after it, if you are going with web dev, so here you start with HTML, CSS, JavaScript but if you know that HTML, JavaScript, and CSS, HTML, CSS people go stuck here and do this for 2 3 months, but that is not a very, I may say that very big thing. तुम्हें अपना time इसमें waste नहीं करना चाहिए. Then after that you should work on JavaScript. JavaScript is very essential. So I have made a plot for you basically that if you are starting computer science, when you done DSA and when you start web dev actually starts from JS. Not take it just I am doing HTML, CSS, so web dev for now. You have to go with JS, then you have to do merge that. After doing this, people go to React Native, Flutter, Shift, what they like. And even in DSA, after doing DSA properly, even when you go do DSA properly, so you can even add things here. That for doing DSA, you can give contest on a lot of platforms like LeetCode. Then you can give your what you say code chef, code forces. Then after doing you go to competitive programming, right? Here, wait a minute. So when you do competitive programming, you can do uh, first of all, what is the use of doing competitive programming? So, if you are doing competitive programming, you can represent your college, your nation in many contests all around the world. And when you do that, many companies eye for you and give you a very good package. But yeah, it is a very hard path to take. So before, I mean, it is a very hard path to take. Much of the people do not take it unless you are very much intrigued. I mean, very much interested in doing the essay and all. So when you do that, then you can move to AI/ML, Web3, algo trading. I present this because I have seen many people from the starting that they want to do AI/ML, they want to do Web3, they want to do algo trading. But I think the best way to go here is that first do this, then go there.
because in longer run it will benefit you. In shorter run it is good, but for longer run you should make it. So first, now what are we doing today classes? So you have any doubt on this particular thing that I have told you? So I may revise it for you all guys. That first computer science we do DSA web dev. There are a lot of platform where you can go. Then you do AI ML web 3 algo trading. So today we are be talking about databases in particular, right? So for there, so what is databases? I am putting here Monstack because Monstack also uses databases. So Monstack goes for MongoDB, Express, React, and Node.js. So MongoDB is a NoSQL database, Express is a library, React is a library, and Node is a backend virtual environment that we use. So now what we have to do? So see what is Mons completely stands for. In MongoDB we will be doing around playing with databases जो डेटा तुम स्टोर करते हो वो MongoDB की हेल्प से करते हो कि मैं डेटाबेस अपना डेटा MongoDB में स्टोर करता हूँ इट्स लाइक दैट एंड व्हाट इज एक्सप्रेस so you know everything is a code at the end of the day. So in what you say programming, we have front end और back end when we make a website. So we make front end जो कि तुम्हें अपील करता है जैसे कि ये तुम देख रहे हो सब कुछ. It is front end. So we make this with the help of React. And then there is something जो back end है. So for example, I should not share it, but I am sharing it. That this is a uh, company in whose backend I am working right now. So you see the data is stored like this in backend. So for making data stored like this in backend and to make the front end interact with this data, we have a thing in between that we call backend. Sorry, I miscommunicated the word. To make the data stored like this in databases and to interact the front end to with this data, we have a thing that is called backend. So what is the role of backend? Backend connects the database to the front end and help us to make a connection between them. So that's why backend is important. So for backend, we uses a node, and in node we use Express library that is like a HTTP protocol for you all guys. So right now what we are doing, then it is just your first class, so I'm not giving you a lot of things around it. We will be talking about databases in particular in today's class. So let us put a topic here. Uh, Here we'll be talking about databases. So right now, if anyone have doubts, they can say. So we will be doing databases right now. So in databases, I told you that MongoDB is also a type of database. But I think all of you have done in your 11th, 12th class SQL, right? How to write SQL queries and all. That is also part of database. Even your 11th, 12th, your CBSE board is starting you with what you say databases. So let me make it more simpler to you. So databases in general or almost are of two types. Hmm. Hmm. So what I said that databases are of two types, right? Hmm. So the first type is known as SQL databases, and second type is known as non-SQL databases. NoSQL databases. So let's here go. What is specialty of SQL databases and how they are different? We have to first get to it why they are two different. So see, today we will be making a small.
practical project. And after doing it, we will be filling it so it will make more sense to all of you guys. So right now, we will understand it through a small practical project. So let's say that you all guys are in college and your college have teachers, your college has office members, and your college have TAs. TAs are teaching assistants. Just like someone who are getting very good marks from you, your college had make them TAs. So for them, we have making a databases that how we will be storing the data in backend for them like that. That we have to store the data. Now, for example, here are tables that these many tables. So how we will be storing data of them in backend. So let's see it. So first of all, we have to make tables that you all guys have almost done in your 11, 12. That from SQL we make tables, and in tables we have different fields, fields, and these fields have different a lot of records in them. So for that, right now we are doing a table. So what the question is, uh, let's write a question that you are in a college and your college want to put their data in database like Mongo DB, and what you have to do there, so you have to make tables and basically basically make a proper plot to how to store data in data in database in the form of table. So this is our question. So what will we be doing? So we have to make tables. So your college have teachers, uh, office members, and TAs. We have to store data of them, right? So this is your question. So how will we be doing it? Any guesses? Hmm. So let me explain you about it. So we will be making what you say. First of all, we have to make how the data will be stored. So let me give you another short file. The diagram that shows how data will be stored is called ER diagram, and the design is called schema design. Okay, so now we have to तो बेसिकली जो भी हम अभी डायग्राम बनाएंगे उन्हें हम स्कीमा डिजाइन ऑफ आर डेटाबेस कह सकते हैं कि हमारे डेटाबेस का ये स्कीमा डिजाइन है दिस आर टू बेसिकली सेम ही बात है हम कैसे भी बोल सकते हैं जस्ट बी कोई इंटरव्यू में पूछे तो भी लाइक कि हाँ एक ही मतलब है दोनों का तो अब हम कैसे करेंगे लेट हाँ सोचो सो वी हैव टीचर्स वी हैव ऑफिस मेंबर्स एंड वी हैव टीएस राइट so we have to store the data of them so teachers for teachers what will be storing
मतलब टीचर्स का क्या क्या डेटा तुम स्टोर करोगे? So you need a name of a teacher, you need email of a teacher. What else you need of a teacher? Contact number, a department, course. Okay. So these are the things that you need of a teacher. What you need of a TA then? So हम data स्टोर करते हैं. So you are not getting one thing that there are some common fields that we need of all these three guys. So let's make a table क्योंकि हमारा कॉमन काम करेगा. कॉमन चीज इन तीनों में आ रही है. First of all, we are just doing basics here. We're not going in that deep. So just take, we are making someone user, जो कि हम इन तीनों की जो मतलब कॉमन वैल्यू है हम वो यूजर में डाल देंगे जिससे हमें डेटा बार बार डालने की नीड नहीं पड़ेगी. एक ही जगह सारा डेटा होगा. आई मीन वी हैव नॉट जैसे और उसका नाम वगैरह हम बार बार लिखने की नीड नहीं होगी हमें. सो व्हाट आर द कॉमन फील्ड्स? So first of all, we will be taking name of everyone. That is something that will be common. Email will be common, right? What else? Think about it. I think there will nothing much common after these two things. I think email और नाम ही हमें चाहिए. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा we think phone number, but if you are email, एक ही बात है, we can neglect it for now. Now we have to make another table, right? What here will be talking about? Just the teachers. What else we need of teachers? So let's first put कि हमें टीचर में क्या चाहिए. वी नीड टीचर का भी नेम चाहिए, मेल चाहिए. टीचर का हमें चाहिए सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही है वो. समथिंग एल्स. डिपार्टमेंट. राइट, बट वी आर सीइंग दैट नेम ईमेल आर हियर, सो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग में. तो इतना समझ आ रहा है ना गाइस. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर. वी विल बी टॉकिंग अबाउट. So we have done with teacher. Now we have office members. Let them named as office member. Okay. Hmm. तो ऑफिस मेंबर्स का हमें क्या चाहिए? We need a name, we need email. What else we need of office member? Think about it, guys. Do we need anything else of an office member? I think हमें उसका रोल क्या है ये पता होना चाहिए ऑफिस में उसका. I don't think that anything else we need or we need. So role in office will be I think more violent. So ये तो हमारा पहले में कवर हो रहा है. So these three are done now. We have to make another table. हाँ, this is for TA, right? TA जो तुम में से कोई बच्चा बनेगा. So what we need of a TA?
लिए टीए का ईमेल चाहिए, टीए की नेम चाहिए, टीए का कौन सा सब्जेक्ट का टीए ये चाहिए और कुछ। थिंक अबाउट इट। आई थिंक बेसिकली अगर हम इतना नहीं सोचते नॉर्मल बना रहे तो हमें बस सब्जेक्ट चाहिए टीए का, राइट। तो अब हमें इन तीनों को कनेक्ट करना है। So when you go in databases, every entry have their unique ID. For example, अगर तुमने यूजर में फॉर एग्जांपल डाला, फॉर एग्जांपल हमने यूजर में डाला मयंक और मेरी आईडी डाल दी mayank@gmail.com. When you will see it in databases, for example, let me see that here is a okay. So when here you will see in customers, we put that in database, but there is a ID that comes by itself. इन डेटाबेसेस की इस यूनिक रिकॉर्ड की ये यूनिक आईडी है। सो लाइक दिस वी नो दैट इन सब की भी जो जो रिकॉर्ड्स होंगे इन सब में यूनिक आईडी होगी, तो वो हम इधर डाल सकते हैं। ऑल्दो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। यूजर आईडी ऑल इन ऑफिस, यूजर आईडी सब्जेक्ट, यूजर आईडी। तो जो इसमें यूजर आईडी होगी जो अपने आप आ रही होगी, यूजर आईडी इसकी भी होती है। अब इसमें अगर है तो इसकी भी एक टीचर आईडी होगी, इसकी भी एक ऑफिस मेंबर आईडी होगी और इसकी भी एक टीए आईडी होगी, राइट। सो बेसिकली जो फील्ड तुम्हारे टेबल में, वी आर मूविंग ऑन टू डिफरेंट थिंग राइट नाउ, जो फील्ड तुम्हारे टेबल में यूनिक होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल। व्हाट आई सेड, जो थिंग तुम्हारे टेबल में यूनिक होती है उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे यूजर आईडी में तुम्हारी ये यूनिक है, तो ये इस टेबल की क्या है, प्राइमरी की। ओके। अब इस टेबल में देखो नेम और चलो ईमेल भी यूनिक होती है, तो उसे भी हम प्राइमरी की मान सकते हैं, बट वी कैन इंडेक्स इट ऑन इवन ईमेल। मतलब तुम कोई भी क्वेरी चलाओगे तुम यूजर आईडी पे भी चला सकते हो, ईमेल पे भी चला सकते हो। इवन हेयर सब्जेक्ट डिपार्टमेंट तो कॉमन हो सकते हैं, यूजर आईडी। नाउ हेयर इज यूजर आईडी, यूजर आईडी वाज अ प्राइमरी की इन दैट टेबल बट it actually belongs to different table, right? User ID. So what will be it here? So here that will be your foreign key, and here teacher ID again will be your primary key. So like this, here this will be your primary key, and here even your user ID will be foreign key, and here your user ID will be foreign key, and PAID will be primary key. So इतना समझो। वी आर जस्ट गोइंग, तो मैं थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ टॉपिक के बारे में, वी विल गो इन डेप्थ इन, वी विल गो इन डेप्थ इन लेटर। सो हमने इसका बना लिया टेबल। अब इस टेबल के थ्रू हम इसमें डेटा पुट करेंगे, राइट। तो वी विल बी, तो एक कूल प्रोजेक्ट इसे कोड पे करके देखते हैं ये कोड पे कैसा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। या एवरीवन इज विथ मी, राइट। सो लेट्स गो टू आवर terminal. In terminal we will going to desktop. In desktop we will be making a directory for
लेट नेम इज कॉलेज। कॉलेज नाम की एक डायरेक्टरी देखो ऊपर आ भी गई है, देन वी विल गो इन दैट डायरेक्टरी एंड देन वी विल स्टार्ट प्रोजेक्ट। सो जो ये सब है हम अब क्या करने वाले हैं, हम इसे डेटाबेस में डालने के लिए एक बनाने वाले हैं अपना बैकएंड। बैकएंड मतलब जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डाल पाएंगे। तो उस बैकएंड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि हमें बैकएंड बनाने के लिए चाहिए होता है एक्सप्रेस और नोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन आवर टर्मिनल, let's hide it, and we are in connect library. So now we have to install node in it, right? So this is how we install node typically in our project. So here we have installed node in it. So now he is saying that तुमने college का बनाया ये सब तुम देख सकते हो. Now we have to install some libraries in it, right? First of all, Express जो कि मैंने बताया था तुम्हें चाहिए कनेक्शन कराने के लिए. Now there is a good case of mongoose here. We need mongoose here. Then we need a body parser here. I will be tell you what all these are and what else we can know. We even know, so we will talk about it later. Okay, now everything is done. So now before starting it, let me make a sheet.txt. Here I will explain you about these libraries. So first, Express. Express basically it acts like a middleware. What is middleware? Okay, so without going in that much depth अभी फर्स्ट क्लास में, so मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूँ कि it helps to connect to HTTPs and server side. And now second, what is Mongoose? So we know that this is a fact I am telling you that we are using MongoDB here, but we know that MongoDB uh, not require any table like structure. मतलब उसमें तुम्हें जैसे डेटा डालना है वैसे डेटा डाल सकते हो. So making for making it sorted, we use Mongoose library. थर्ड अपना क्या था, बॉडी पार्सर. इसको भी हम समझेंगे बाद में. So now let's start what we have to do. What we have to do. So we have thought about tables. Uh, See, we have thought about tables, right? Tables here. We have to write a code like कि हम उन टेबल में डेटा डाल सके via using our backend, and even then we can connect it using connect it to front end using backend. So ये हमें करना है. इन दिस लेक्चर हम बैकएंड से डेटाबेस में डेटा डालेंगे इन गुड एंड क्लीन कोडिंग practices, right? So what we have to do, see हमारे पास टेबल है, बट उस टेबल में डेटा डालना है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को मतलब कहीं हमें यूज करना पड़ेगा ना बैकएंड में कि हमें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेटा डालना है. तो फॉर दैट वी मेक अ थिंग दैट इज कॉल्ड मॉडल. तो उसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा. So let's start with the making model. So this is VS Code that you all guys know. So let me make a models folder. अब init सबसे पहले हमारा फाइल बनेगा user. So I think it will be gone little bit tricky to all of you guys in starting what we are doing.
So what we can do in the starting key, let make users को हम डाल देते हैं हर किसी में ही. मतलब in the starting we will not what I'm saying. What the fuck is it? Sorry. So in the starting, we will not making user. We will teach you about this practice in detail in later classes. मतलब next जो classes होगी अभी हम सिर्फ 3 मॉडल्स बनाते हैं. That will be I think better. या फिर हम ज़्यादा बना सकते हैं. So, okay, I think we should not have any problem in making even user, but let's go with a model which will be teacher. एक टीचर का मॉडल बनाते हैं, एक ऑफिस मेंबर का बनाते हैं और एक टीए का बनाते हैं. And next time we will be learn more about it. Teacher.js बनाते हैं. Now you see that this is giving a text file because I have put extra spaces here. Now this is a JS file. Now here what we can do, we can even use tech here, uh, but we will use it. But first of all, we should know now how to we have to code it and how we have to do it, right? So first of all, हमने जैसे बोला था हम इसके लिए यूज करते हैं mongoose को. अब इसमें थोड़ा सा हम मतलब कुछ भी लिख सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है. बट इट इज गुड प्रैक्टिस कि तुम mongoose लिखोगे. मतलब वेरिएबल नेम तो कुछ भी दे दो यार. अब तुम्हें एक टीचर का स्कीमा बनाना है. इट इज लाइक दैट. अब इसमें क्या क्या डालना है बताओ. अभी हम नेम डाल सकते हैं. नेम किस फॉर्म में आएगा, टाइप क्या होना चाहिए नेम का. मतलब तुम्हारा नेम एक स्ट्रिंग ही होता है. आई थिंक इतने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो गाइस नो. फिर हमने जैसे सोचा था हमें ईमेल देनी है, ईमेल हम दे देंगे. उसके बाद we are not giving contact, we are giving department page 9. उसके बाद हम क्या दे रहे थे डिपार्टमेंट के अलावा. आई थिंक अगर इसे हम कंपलसरी ना करें तो बेटर रहेगा. So we are giving done it like this. Now what else we have to do? Anything else? क्या था क्या बच गया. We want to give subject, right? अब एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा भी पढ़ा सकता है. तो लेट्स वी शुड गिव इट इन कि तुम कितने भी सब्जेक्ट लिख दो. तो दिस इज दैट वे राइट. अब तुमने इसके बाद क्या करना है. अब तुमने कॉन्स्ट करके mongoose मॉडल ऐसे चला देना, फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देना टीचर को. नाउ दिस इज हाउ यू गो. नाउ हमें बनाना है टीए का राइट. टीए डॉट जेएस बनाते हैं. अब इसमें वी कैन यूज एक्चुअली कोपायलट टू से हमें पता है मॉडल कैसे बनाना है. तो वी विल से हिम कि मेक अ मॉडल फॉर अस. मेक अ टीए मॉडल फॉर अस where we need name, email and subject. Let's see will be Copilot able to make it. Yeah, Copilot had did it. So we will paste it here. So we have made a TM model. Then what was the left? The last was, I guess, staff members or office members. What was that? That was office members, right? So now we have to make the for office member dot js. Okay, so it is having a low pattern. Let me connect. Now it is connected to office members. Same. We make a office member model that will have a name, email, or role in office, right?
So role in office will be what you say. It should be string. We can even give enum here. Even is basically कि तुम option दे दो, but let's in the starting go with string, not make it complicated. So we have made the three models. Now what we need. So after it, let's go to our sheet. We had made models. Now we have to make something so that we can put data in databases. अब इस मॉडल से डेटा थोड़ी जा रहा है, इसलिए तो तुमने स्ट्रक्चर बनाया बस. पुट डेटा इन डेटाबेसेस. अब पुट ही कर रहे हो तो वी कैन एडिट अपडेट कर सकें, हम डिलीट कर सकें, हम रीड कर सकें डेटाबेसेस में क्या है. तो इन तीन चारों चीज़ों को हम मिला के बोलते हैं थर्ड ऑपरेशंस. व्हाट इज थर्ड ऑपरेशन? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो बेसिकली थ्रेड ऑपरेशंस वो होता है कि तुम कुछ ऐसे लिखो कोड में जिसकी मदद से तुम जो डेटाबेसेस में तुम्हारा जो डेटा जाएगा उसमें डेटा डाल सको. दैट इज क्रिएट. रीड इज समथिंग कि तुम डेटा है उसे पढ़ सको. अपडेट इज समथिंग कि जो डेटा है वो तुम अच्छे से देख सको कि क्या डेटा है उसके अंदर. और डिलीट है कि तुम्हें कोई डेटा हटाना है. फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर छोड़ के चला गया, उसका डेटा हटा दो. समथिंग लाइक दैट. सो हाउ वी विल डू इट? सो फॉर दिस we will be, tell me guys, what will be doing for this? Anybody know it? We will be, for this we will making APIs, right? For this we will be making APIs. तुम्हारा basically कुछ भी होता है, HTTP लगा दो, ये करके कुछ भी लिखा है, something like this is your API. अभी के लिए इतना सोचो, समझो मतलब. तो हमें APIs बनानी पड़ेगी. So for every table we need to make four such APIs. तो हम चार फाइल्स बना लेंगे. तो जो thing like that we do basically in a folder which we name it like routes. हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसको हम देते हैं नाम routes. Let me check. ये स्पेस ज़्यादा है. ओके. तो हमने एक फोल्डर बनाया route. अब what how will be doing it in it? Guys tell me. Now we have to make things in it. तो ऑफिस मेंबर का नाम डालें. Let make it office member routes. तो यस नेमिंग भी अच्छे से करनी चाहिए guys. सीखो नेमिंग कैसे करनी है. तो अब हमें इसमें डालना है इसका राउट. तो सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, उसकी नीड होगी हमें, राइट. देन हम ऑफिस मेंबर का बना रहे हैं तो वी वन नीड उसके मॉडल का हेल्प चाहिए होगा हमें. अब हमें एक एक्सप्रेस का एक होता है थिंग राउटर, उसकी हेल्प से हम एपीआई बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें करना है क्रिएट करना है अ न्यू ऑफिस मेंबर, राइट. तो उसके लिए हम राउटर जो हमने बनाया उसे यूज करेंगे. ओके. नाउ देयर इज समथिंग लाइक देयर आर, आई विल टीच यू विद इट. पोस्ट से क्या होता है, पोस्ट की वी आर गिविंग डेटा टू द सर्वर. तो जब हम किसी का आईडी क्रिएट कर रहे हैं न्यू ऑफिस मेंबर, तो हमें वो डेटा देना पड़ेगा ना सर्वर को. तो उसके लिए हमें पोस्ट राउट बनाना पड़ता है. तो राउटर डॉट पोस्ट. अब इसमें हम आई थिंक दिस इज गुड इनफ. चलो हम इसे अब समझाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज गुड इनफ? I think let's not go like this.
हम इतना इस एपीआई को हमने बोल दिया इसका एंड पॉइंट ये होना चाहिए और हम रिक्वेस्ट और रेस्ट बॉडी ला रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे जिसमें वी नीड क्या क्या आएगा हमारा इसके लिए ऑफिस नंबर के लिए नेम। वी कैन चेक इट फ्रॉम हमारे पास नेम मेल और रोल इन ऑफिस है। ठीक है, तो हम लेंगे नेम, ईमेल, रोल इन ऑफिस फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हेल्प कर रहा है हमें कि जो तुमने लिखा है उसको पोस्ट करते टाइम वो लाने के लिए। तो वी आर यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी देयर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू अहेड, टेल मी गाइस। अब हमें एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। ट्राई मतलब कि ये ट्राई करो, और कोई एरर आता है तो मतलब हम एरर शो कर देंगे कि ये वाला एरर आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा ऑफिस मेंबर बनाया एक न्यू जिसमें हमने ये सब डाला, और फिर उसे हमने डेटा में सेव कर दिया और ये भेज दिया कि सेंड ऑफिस मेंबर की एवरीथिंग इज नॉन गुड। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखें बताओ? सोचो, मतलब सोचना क्या है, इट्स इजी। तो वी कैन गो इट लाइक जेसन मैसेज ऑफिस मेंबर क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट? So this is how we created a post request जो कि हमारा एक न्यू ऑफिस मेंबर बना दिया। अब लाइक दिस, अब हमें चाहिए सारे ऑफिस मेंबर गेट ऑल जितने भी बने अभी तक, उसके लिए हम बनाएंगे गेट रिक्वेस्ट। तो उसमें हमने ऑफिस मेंबर्स पे, पर इसमें गेट रिक्वेस्ट है मतलब हमें चाहिए, तो हम इससे कोई से दे नहीं रहे हैं। ऑफिस मेंबर जितने भी आ रहे हैं वो फाइंड कर रहा है और हमें दे दे रहा है। जस्ट लाइक दिस। नाउ हमें कोई चाहिए बाय आईडी। ऑफिस मेंबर बाय आईडी। तो हमें आईडी से चाहिए तो हमें उसमें भी गेट ही यूज कर रहे हैं, राइट? बट दिस विल नॉट टू गो लाइक दिस आई गेस। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अब हमें आईडी तो हमने दिया ना। आईडी जो है हमारी, वो तो बेसिकली जैसे हमने ऊपर लिया था, हमें आईडी निकालनी पड़ेगी ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब इसमें पैरम से निकाल सकते हैं। तो लेट्स गो विथ पैरम। तो पैरम्स इज बेसिकली तुमने यहाँ पे जो लिख दिया इसे हम पैरम्स बोलते हैं। जब हम ऊपर आईडी निकाल रहे थे, कहाँ क्या पोस्ट में, तो वो हम बॉडी से निकाल रहे थे, वहां तुम इधर नहीं लिख रहे थे, वो तुम बॉडी में दे रहे थे। आई विल एक्सप्लेन इट फॉर हिम व्हेन वी गो टू पोस्टमैन। तो हमने पैरम से लिया, अब हम ट्राई बनाएंगे इसका। अब वो फाइंड करेगा उस आईडी को, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब उस आईडी से वो फाइंड कर रहा है कि उस आईडी से मतलब कोई है ऑफिस मेंबर। अगर उसे नहीं मिलता है तो वो बोलेगा ऑफिस मेंबर नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता है तो वो तुम्हें दिखा देगा ऑफिस मेंबर। ये ऑफिस मेंबर तुम समझ, यही वाला है, ओके? तो इसमें हम डाल देते हैं गेट व्हेन वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर। अब हमें क्या करना है, इफ वी वांट टू अपडेट, अब जैसे हमने थ्रेड में कर दिया है क्रिएट, रीड, अब अपडेट और डिलीट बाकी है। अब वी वांट टू अपडेट, तो उसके लिए हम अपडेट एंड लिए हम यूज करते हैं वेक्टर डॉट पुट। अब हमने किसी की आईडी ली, अब बेसिकली
हमने पहले तो क्या किया इसमें, हमने उससे आईडी ली पैरम से, और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट फॉर बॉडी से लिया, फिर इफ ऑफिस मेंबर का हमने फाइंड बाय आईडी और उसको आईडी से फाइंड किया और उसे हमने अपडेट कर दिया। तो उसमें ये सारे डाल दिए उस आईडी वाले बंदे में। अब हमें बाद में क्या चेक करना है? तो इसमें हम कुछ ऐसे भी डाल सकते थे, कौन सा अपडेटेड मेंबर है ना, अगर तो इससे अपडेटेड ऑफिस मेंबर लिखो फॉर मेकिंग नाम कन्वेंशनल ईजियर, नेम कन्वेंशन ईजियर। अगर वो है, अगर उसे नहीं मिलता तो वो लिख देगा कि भाई मैं तो ऑफिस मेंबर था, वो फिल आई नहीं, वरना नॉट फाउंड, राइट? So basically, first of all, office. Now we have to do is स्टेटस अपडेटेड ऑफिशियल मेंबर, मतलब हमने उसको अपडेट कर दिया और जो अपडेटेड है उसका हमने वो दे दिया। बट इसको थोड़ा हम बेटरली भी शो कर सकते हैं ना, आई गेस। तो आई थिंक इसमें हमें जेसन तो है ही है, तो इसमें हमें इसको ऐसे शो करने की जगह यू कैन बी लाइक मैसेज दे दो, ऑफिस मेंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, बट फिर उससे दिखाओ तो एक बार कि ऑफिस मेंबर क्या है। तो ऑफिस मेंबर इक्वल्स टू, अब हमने नाम क्या दिया था वेरिएबल का, अपडेटेड ऑफिस मेंबर, राइट? तो यहाँ से हमने इसको कर दिया है पूरा। फिर यहाँ पे अपना ट्राई ब्लॉक खत्म हो जाना चाहिए, राइट? अब उसमें हमें देना पड़ेगा 500 डॉट, एंड भी क्या करना है, हम डॉट जेसन में डाल देते हैं मैसेज में, मैसेज एरर अपडेटिंग। आई थिंक इट इज फाइन। नाउ व्हाट इज द इशू हियर, we have to solve this. You can even use try block to solve the issue now, मतलब co-pilot not try block. Yeah, it's cool, and it is done in this if you need to end this to this. Now it's fine. Okay. तो हमने अब क्या कर दिया, अपडेट। तो हमने अब इसमें देखा कि पुट वी आर अपडेटिंग डेटा। अब नाउ हमने थ्रेड में क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है, रीड कर लिया है, अपडेट कर लिया है, वी हैव लेफ्ट विद डिलीट एन ऑफिस मेंबर, राइट? डिलीट ऑफिस मेंबर बाय आईडी, राइट? तो डिलीट के लिए क्या यूज होगा, ऐसे राउटर डॉट डिलीट। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहीं से पैरम से उठाएंगे, फिर हम ट्राई करेंगे डिलीट में अवेट लिख के कि भाई वो ऑफिस मेंबर बाय आईडी को हम पता करो। अगर वो अब अवेलेबल ही नहीं है तो लिख दो कि ऑफिस मेंबर नॉट फाउंड। अगर वो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये फंक्शंस देखो तुम, ये फंक्शंस तुम्हें सेट करेंगे। हमने इसमें किया फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट की, ढूंढो अगर मिलता है फिर उसे डिलीट करो। तो इधर हमने आईडी एंड अपडेट यूज किया, इधर हमने फाइंड बाय आईडी, और इधर हमने फाइंड किया है टू गेट ऑल, और इधर आई थिंक हमने डेटा पुट किया तो हमें फाइंड करने की नीड नहीं पड़ी। तो ऐसे डिलीटेड सक्सेसफुली। हाँ, नाउ वी हैव टू गो फॉर कैच ऑफ इट कि वो बन गया, तो हमने एक थ्रेड बना दिया इसके। अब एट द एंड हमें वही अपना जो बॉयलर प्लेट कोड होता है इतना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ वी हैव राइट द फंक्शन फॉर इट, और इसमें हम लिख देते हैं डिलीटरी था थ्रेड में। सो बट वी आर डिलीटिंग डेटा टू द सर्वर। नाउ हमने इसका बना लिया है, हो गया है। अब ऐसे हम बनाएंगे टी ए राउट्स डॉट पेज। नाउ इतना हमने कर लिया है, नाउ वी कैन वी अंडरस्टैंड कि राउट्स कैसे बनते हैं।
So we will now give it to Copilot कि हमारे लिए route बना के दे दे. So just just what is happening here? Just uh, just like office members routes make routes for TA of make CRUD लिख देता हूँ CRUD routes for TA. Let's see will he be able to make it. So I think yeah he has done a great job. We can make delete update by ID. So it's good. Perfect. That's good. We got it here. We don't need in every file. Okay, but you can put it. Now we will left with teacher route dot yes. तो हमने अब इसे हम टीचर पर लिखते हैं just make for teachers to now हमने मॉडल्स बना दिए हमने स्प्रेड ऑपरेशन बना दिए नाउ वी नीड अ सर्वर राइट कि जिसकी हेल्प से हम उसे आगे भेज सकते हैं तो या वी हैव अ टीचर्स route to now we what we need now tell me guys uh, what we now what we need guys tell me we need a server right now so we will have to make server.js इसमें प्रॉब्लम आ जाती है जब तुम पीछे स्पेस लगा देते हैं तो server.js नाउ server.js में तुम्हारा क्या होगा एनीबॉडी हैव एन आइडिया बेसिकली अब उसके लिए हमें एक यूज करना पड़ेगा npm install .env अब .env से काम किया what is the role of .env we did it as .env so basically तुम अपनी keys जो होती है so basically you can't put your keys in the code okay because of privacy issues and all अब तुमने अपने कोड में अपनी कीज वगैरह डाल दी और तुमने अपना कोड दिया पुश कर दिया गिटहब वगैरह पे तो उसके बाद तुम्हारे कोई कीज वीज पढ़ लेगा तो तुम्हें तो दिक्कत हो जाएगी ना कि तुम्हारा कोई मोंगो डीबी यूज कर रहा है कोई तुम्हारा कुछ यूज कर रहा है मतलब तुमने जो भी की दी है तो दैट्स वाई फॉर मेकिंग कीज प्राइवेट वी यूज .env तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमने इंस्टॉल कर लिया अब हम एक फाइल बनाएंगे .env राइट नाउ we have to first make what we have to write on server तो सर्वर में हमने जो सब कुछ बनाया उसे बोलना पड़ेगा इस पोर्ट पे रन कर वगैरह वगैरह तो आई थिंक इसमें मैं तुम्हें लिख के ही बताता हूँ पहले हमने जो अभी डाउनलोड किया रिक्वायर डॉट एन वी डॉट कॉन्सिंग कर देंगे उसे हमें एक्सप्रेस हमें चाहिए होगा फिर हमें मोंगोस भी चाहिए होगा फिर हमें बॉडी पार्सर भी चाहिए होगा बॉडी पार्सर मैंने तुम्हें नहीं बताया था ना व्हाट इज यूज ऑफ दिस तो इज अ मिडलवेयर explain हम तुम्हें in layman terms to 5 year old person so so we got it so what is body parser it was a very good example right there. So think of a body parser जो कि तुम्हारा helper है that takes a box of letters
the data sent to your app and opens it so you can read what's inside. So basically जो डेटा है उसे तुम्हें रीड करने के लिए कि वहां से जो डेटा आ रहा है वो क्या है, तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा बॉडी पार्सर चाहिए होता है. So we have done it. अब now we have to import these files, right? सारे राउट जितने भी बनाए हमने. Now we have done it. Now fonts app. now तुम्हें इससे हम एक्सप्रेस का भी पूछ लेते हैं, किसी को कोई डाउट रह गया तो. In a web framework, it helps us to build an application API by providing a set of features and tools to handle HTTP routes. So ये हम कह सकते हैं. इसके बाद में हमें एक्सप्रेस जो है वो हमारा एक वेब फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो हमें हेल्प करता है बिल्ड वेब एप्लीकेशन और बाय एप्लीकेशन एपीआई बाय प्रोवाइडिंग फीचर्स एंड टूल लाइक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मिडलवेयर एंड मोर. मतलब जो भी हम सब कर पा रहे हैं इसके यूज से ही कर पा रहे हैं. मतलब नोड जेएस के ऊपर एक लेयर है एक्सप्रेस की, जिसकी मदद से जो हमने अभी किया है वो हमने अचीव किया है. वॉट माई पॉइंट. तो उसके लिए हमने यहाँ पे अभी भी हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो ऐप डॉट लिसन हमने कर ही रखा है. अब हमें कॉन्स्ट और चाहिए तो लेट यूज. हम बेसिकली 3,000 करते हैं, बट हम अभी 6,000 करते हैं. और हमें एक मोंगो यूआरएल भी चाहिए होगा. ओके. अब हमारा मिडल वेयर का जो काम होता है, आई थिंक ये तुम्हें इतना समझना है तो इट्स ओके, इट्स योर फर्स्ट क्लास. विद टाइम यू विल गेट इट. फिर हमने जो हमने मोंगो यूआर डाला उससे कनेक्ट भी तो करना है. कनेक्ट टू मोंगो डीबी. तो हाँ, फिर अपना पूरा आ गया कोड ही अपने आप, इसने खुद ही कर दिया. अब हमें यूज भी करनी है राउट्स. राउट हम फीचर्स को यूज कर रहे हैं, टीए को यूज कर रहे हैं, बट हम इसमें आगे वो दिखा सकते हैं ना, एपीआई. This is something that we can do to make it more logical. Now तुम्हें अभी पता लगेगा ये क्या हो रहा है. इट्स नॉट दैट टफ. अब हमें ऐप डॉट अपने पोर्ट कल को यूज भी करना है, राइट. नाउ आई थिंक वी हैव डन विथ आवर ऑल दिस. नाउ हम इसे एक बार चला के देखते हैं. इसके लिए हम एक बार यूज इंस्टॉल कर लेते हैं नोडमोन को. नोडमोन बेसिकली कुछ नहीं है, तुम्हें बार बार रीरन ना करना पड़े इसके लिए हम नोडमोन यूज करते हैं. ये नोडमोन सर्वर डॉट. Oh shit, there are errors. So we will tell this error to this. Actually, it is not a big error क्योंकि तुम्हारा सर्वर रन कर रहा है, but we will definitely tell. Okay, so you got it why this error is come. हमने env फाइल बना लिया बट उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं अभी तक. So here what we'll be doing. First of all हमें पोर्ट देना है env फाइल में, और दूसरा हमें क्या करना है, हमें db url देना है. तो हम पोर्ट दे देते हैं अगर भी 6,000. अब db url के लिए जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक db url बना लेंगे हम. कॉपी करते हैं इसकी स्ट्रिंग, ये मोंगो डीबी के पास है, और इसके लिए डेटा बेसिस तो दिस नाम की जगह हम इसे नाम रख देते हैं कॉलेज. नाउ आई थिंक व्हेन वी विल बी यूजिंग इट इट विल बी वर्किंग. यस. ओके. अभी भी एरर है क्योंकि वो पोर्ट कहीं यूज हो रहा होगा आई गेस, इसलिए वो हम क्लियर कर सकते हैं. बट ओके,
So we have to clear this error first right now because ये सब पे error show करेगा वरना. So we will go with our 3000 watt. I think 3000 error ही आ रहा है. Nice, 3000 जो is working वो empty था. Now हमने सब कर लिया. Now we want to see कि how is it working. So here is a postman जिससे हम डालेंगे. We can check it. So postman we are using 3000. और हम क्या किया एपीआई हमें लगाना पड़ेगा. हम पहले जा रहे हैं टीचर पे. तो टीचर के राउंड में हम क्या डालना चाहते हैं किसी टीचर को क्रिएट करना चाहते हैं. एपीआई टीचर टीचर्स है इसमें. ठीक है टीचर्स. फिर उसके बाद हमें क्या डालना है नेम डालना है ईमेल डिपार्टमेंट. हम वी डोंट नीड दिस एक्चुअली आई वाज ट्राइंग दिस बिफोर क्लास. और courses I think you need subject here. Subject. It's fine. Department email. Okay, so it's about teacher created successfully. Now I will name teacher Mayank Smith. Mayank पढ़ा रहा है तुम्हें वो साइंस पढ़ा रहा है. साइंस डिपार्टमेंट से बंदा अपना. और तुम्हें पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पढ़ाएगा तेरा भाई फिजिक्स. और केमिस्ट्री तो मुझे पसंद है. चलो बायो पढ़ाएंगे. बायोलॉजी. चलो अब इसमें हम देखते हैं. आई थिंक इसमें बनना चाहिए. मैं तुम्हें दिख रहा होगा एडमिन. कॉलेज आ गया ना. कॉलेज में ऑफिस मेंबर की केस तो हमने दो टीचर्स बनाए. एक टॉन्स में आ चुका है और एक तुम्हारा मयंक आ चुका है. अब देखो मयंक तो कुछ बार पढ़ा रहा था. अब भाई के चलते हैं. अब तुम्हें हम बनाते हैं डुप्लीकेट. इसके पूरे एपीआई सेंड करके दिखा देते हैं. अब गेट ऑल टीचर्स. तो उसके लिए भी नीड दिस गेट रिक्वेस्ट है. टीचर्स ही है. हमें कुछ देने की नीड है नहीं. अब हम इसे सेंड करेंगे तो आई थिंक सारे टीचर्स दिखा देगा. देखो दो टीचर्स से तुम्हारे डेटाबेस में इसने दिखा दिए. राइट नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड टीचर बाय आईडी. ठीक. तो बेसिकली हम कलेक्शन का नाम भी सही कर देते हैं. क्रिएट टीचर ईमेल गेट ऑल. गेट ऑल टीचर. नाउ डुप्लीकेट बनाते हैं इसका. तो इसमें हम क्या करना है गेट अ टीचर. और इसमें हमारा टीचर है. तो अपना वो तो सेम ही यूज हो रहा है यूआरएल. इसमें क्या है उसके बाद हमें टीचर की आईडी देनी है. अब इसमें इसकी आईडी के लिए है तो चला. देखो मैंने इसे आईडी दी और इसने तुम्हारा ये मयंक वाला टीचर दे दिया. अब मैं इसे अगर इसकी आईडी देता हूँ. इसने इसने दे दिया तुम्हारा. सही है ना. अब तुम्हें अपडेट करना है टीचर. तो टीचर को अपडेट करना है. अपडेट और टीचर क्यों है पीछे से कॉपी हटा दो. अब हमें टीचर को अपडेट करना है. तो टीचर को अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं पुट. तो उसमें अब हमें क्या करना है. हमें देना है आईडी के साथ देना है. तो ये है स्मिथ की. राइट बट यहाँ चलो मयंक का हमारे पास डेटा पड़ा है अभी. थोड़ा इजीली हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्या बताऊँ. हमने मयंक की दी है आईडी. अब नाउ हमें क्या करना है अपडेट करना है टीचर पे. तो हम इसमें क्या करते हैं. भाई मैं बायो नहीं पढ़ाऊंगा. इसे करते थे अपडेट. क्या कर पा रहा है अपडेट. देखते हैं इसमें. हाँ तो टीचर्स में देखो अब इसमें बायो हट गया तो इसने अपडेट कर दिया. तो यहाँ अपडेट इज वर्किंग फाइन. नाउ डिलीट द टीचर. हाँ डुप्लीकेट बनाते हैं. इन्हें डिलीट अ टीचर. इसके लिए भी यूआरएल तो सेम ही है. मयंक तो डिलीट नहीं होने वाला. तो दूसरे वाला करेंगे. इसको डिलीट कर देते हैं.
ऐसे सिंपल। तो डिलीट, और कुछ देना डिलीट में? नहीं, आईडी देनी है। तो हाँ, टीचर डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर हम इसे दोबारा ओपन करेंगे तो वो चला गया। अब नाउ हम गेट टीचर में देखते हैं। इसमें था ना, तो अभी डिलीट हो चुका है, तो एक गेट था, मैं नहीं आना चाहिए। द टीचर नॉट फाउंड। So everything is working fine. So yeah, this was everything that we have done today. So हाँ, अब साथ में हमें एचक्यूएल और नो एचक्यूएल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट? तो मैंने तुम्हें बोला था जैसे कि मोंगो डीबी तुम्हारा नो एचक्यूएल डेटा है, तो उसमें डेटाबेस कैसे डाल सकते हो? तो बेसिकली उससे तुमने क्या समझा कि नो एचक्यूएल डेटा वो होते हैं जिनके जो टेबल बेस्ड जो नहीं होते, फर्स्ट ये। तो उसके बाद जब कोई टेबल बेस्ड डेटा नहीं है तो इसका जो सामने वाला है एचक्यूएल या मोंगोस लाइब्रेरी टेबल बेस्ड होते हैं। ओके, अब आगे क्या हो सकता है और क्या डिफरेंस होगा इनमें? टेबल बेस्ड है तो फिक्स्ड होंगे, तो उनका स्कीमा हमारा प्री डिफाइंड स्कीमा होगा, जैसे इसका था, जैसे हमने कहाँ किया है, यहाँ पे हमने स्कीमा प्री डिफाइंड किया है तीनों का। ओके, तो प्री डिफाइंड स्कीमा होगा क्योंकि हमने मोंगोस लाइब्रेरी के थ्रू किया है ना, जो कि एचक्यूएल लाइब्रेरी है। तो इसमें वेरीज करता होगा और नॉट प्री डिफाइंड स्कीमा, राइट? नाउ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? जब तुम्हारे डेटाबेसेस में टेबल्स फिक्स हैं तो तुम उसे उसमें और डेटा अच्छे से डाल सकते हो, वर्टिकल स्केल कर सकते हो कि भर दो 1 लाख डेटा, 2 लाख डेटा, 3 लाख डेटा, लाइक दैट। बट अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो उसे। मतलब ईमेल था, इसमें बस ईमेल है, अब मेरे को फोन भी डालना है, फोन भी डाल दिया, तो हॉरिजॉन्टल स्केल इजी होता है नो एसक्यूएल में। समझ रहे हो ना? और ये फॉलो करता है तुम्हारी एसिड प्रॉपर्टीज को, जो कि होती है तुम्हारी ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जो कि वी विल लर्न। और ये तुम्हारा किसी को फॉलो नहीं करता। और क्या हो सकता है इनमें? ये तुम्हारा होता है स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि तुम्हें पता है टेबल वेबल सब बने हुए हैं। और ये तुम्हारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास एक मोंगोडीबी है, इसका तो मैं एग्जांपल बताऊं। माई एसक्यूएल जो तुम स्कूल में सीखते थे, देन ओरेकल एक होता है पढ़ना, इसके बारे में पोस्टग्रेस भी होता है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ना, इसका एग्जांपल बस मोंगोडीबी तो नहीं है, और भी होंगे। तो एक तो तुम्हारा मोंगोडीबी है ही। हाँ, फाइंड आउट एग्जांपल। ओके गाइस, तो ये सब है। आई थिंक यू लाइक द फर्स्ट क्लास, तो मैं थोड़ा जिस्ट दे दिया मैंने सब चीज़ों का। आई होप सो you get that well. Thank you guys for being here.